Welcome back to the Fashion Pattern Lab. Today we will learn how to make welt pocket. For the single welt, first you need to decide the pocket length and width. यहाँ मैंने 2.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 13 सेंटीमीटर पॉकेट विड्थ का पैटर्न रेडी कर लिया है. Now for the pocket bag, it is 13 centimeter in width and 38 centimeter in length. Cutting process. पॉकेट बैग के लिए लाइट वेट फैब्रिक यूज करेंगे और 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस इंक्लूड करके पॉकेट बैग कट कर देंगे. You will also need a rectangular piece. ये पार्ट पॉकेट बैग के ऊपर अटैच करेंगे जिससे पॉकेट बैग का फैब्रिक विजिबल नहीं होगा. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये तीनों पैटर्न्स मैंने इक्वल विड्थ के ही कट कर लिए हैं. सोइंग प्रोसेस. पॉकेट बैग पर 5 सेंटीमीटर गैप छोड़कर पॉकेट साइज मार्क कर देंगे. और फिर पॉकेट बैग को फैब्रिक और गारमेंट की राइट साइड पर प्लेस करके पिंस से सिक्योर कर लेंगे. Now stitch along the pocket marking. Next, cut precisely along the center and sides. Insert the pocket bag fabric into the wrong side of the garment. Then iron it. Ensure neat corners and no visible pocket bag fabric from the outside. अब वेल्ट प्लेस करेंगे. और कॉर्नर्स पर टॉप स्टिच से फिनिश करेंगे. दिस टॉप स्टिच इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इसी स्टिच लाइन से फिनिशिंग लेवल का पता चलता है. तो मेक श्योर आप बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करें. To finish the bottom part of the welt, flip the pocket bag and stitch it. Now the white fabric of the pocket bag is visible. So place the rectangular fabric over the pocket bag where the pocket opening is located. Fold one side and crease it. बाकी 3 sides pocket bag में hide हो जाएंगी. Then इस piece को pocket bag पर as a patch paste कर देंगे. Now you can see only the red fabric is visible here. Complete the pocket by joining the pocket bag together and cutting any extra seam allowance. The single welt pocket is complete.
We will learn how to make a double belt pocket in the next video. Thanks for watching Fashion Pattern Lab.